guys, today I'm gonna teach you how to make actually two sauces. So first will be Southwest aioli. This a typical sauce that is used with cocktail snacks and like with munchies. So we'll be needing mayonnaise. I'm using garlic mayonnaise. You can use normal mayonnaise as well. I'll be using chili sauce or normal ketchup. I'll need some cilantro or dhaniya and एक नींबू. Now I'll cut the dhaniya. I'll fine chop it. और 1.5 चम्मच मेयोनीज लेंगे. हम इसके अंदर ये सॉस डाल देंगे. इसके अंदर एक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे. इस लेमन की एक हल्की सी वेज काटेंगे. इसमें स्क्वीज कर देंगे थोड़ा सा नींबू और. And हमारी cocktail sauce ready है. Now our second sauce will be salsa. So it is a very tangy sauce and ये nachos के साथ बहुत अच्छी लगती है. Like किसी भी आप चिप्स वगैरह के साथ इसे खा सकते हैं. इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज टमाटर, प्याज, 2 हरी मिर्चें, एक लेमन, थोड़ा सा धनिया, टमाटो केचप, ब्लैक पेपर. आप इसके अंदर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. तो पहले हम हर चीज को फाइन चॉप कर लेंगे. तो हमने धनिया इसमें डाल दिया. अब हम प्याज चॉप करेंगे. आप जितना फाइन कर सकें इस प्याज को उतना फाइन कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा बढ़िया लगेगा वो. कटा हुआ प्याज उसमें डाल दे और हम अपना टमाटर चॉप करेंगे. सो हमने इसके अंदर सब डाल लिया अपना चॉप करके. तो इसके अंदर अपने लेमन स्क्वीज कर देंगे. Now we'll add a little bit of black pepper. And 2 spoonful of ketchup and we'll mix it properly. और हमारा सालसा रेडी है. अगर आपको और नमक चाहिए हो तो आप इसके अंदर नमक डाल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स. दैट इज टोटली अप टू यू. बट ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है. थैंक यू. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. ऐसी और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद.